Hello, dear programmers. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this very special series of pattern printing course. अलग अलग पैटर्न्स को स्टडी करने वाले हैं. Some of them are number pattern, some of them are star pattern, some of them are character pattern or alphabet patterns. But obvious question comes into everybody's mind is why to learn pattern printing codes? One thing is they are very interesting, no doubt about it, right? But few reasons that I found with respect to why pattern printing, and सबसे पहले and most important factor to learn pattern printing code उभर के आ रहा है मेरे हिसाब से technical test. And most of the technical test or exams में your programming ability is tested against this pattern printing. So this series is going to help you a lot to crack each and every code that may appear with respect to your technical test. Next to that, जब आप पैटर्न प्रिंटिंग के कोड के ऊपर काम करते हो तो आपका लॉजिक डेवलपमेंट एंड डिबगिंग स्किल्स बहुत ही परफेक्ट होगा. एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज अ फ्लो कंट्रोल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड रिकर्शन, जो हर टेक्निकल टेस्ट में अप टू 40% टेस्ट किया जाता है. तो उसको अगर सबसे क्लियर करना है तो दिस इज वन वे. सो डिसीजन मेकिंग, लूप्स एंड रिकर्शन को परफेक्ट करने के लिए यू शुड गो ऑन वर्किंग अक्रॉस द पैटर्न प्रिंटिंग कोड्स. एंड जब इतना सारा कुछ हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग के साथ करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. So this series is going to help you in building your confidence against problem solving. And ये सबको यूज करके आपके अल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो सोचना है अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सो अल्गोरिथमिक डेवलपमेंट विल बी मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए आप तैयार हो जाओगे, राइट? नेक्स्ट टू दैट, गेम डेवलपमेंट एज वेल एज डिफरेंट फॉर्मेटेड आउटपुट्स को डिस्प्ले करने का स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है ये भी आप पैटर्न प्रिंटिंग के थ्रू learn कर पाओगे. And most important is some of the programs that are expecting you or that challenge you for pattern recognition and pattern matching concept, तो उसके बारे में भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ये पैटर्न प्रिंटिंग के कोड्स आपको हेल्प करने वाले हैं. So these are some of the reasons that I found for learning the pattern printing. But सबसे important aspect is जब पैटर्न प्रिंटिंग के कोड्स करते हैं तो we get interest into the programming a lot. So almost 30 plus patterns इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं, starting from easy level to moderate and then tough level. But believe me that हम लोग reusability का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड इजी लेवल में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उन्हीं को कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए कैसे यूज करना है ये बहुत फ्रूटफुल वे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं. So I'm very eager to move into the first code of pattern printing and I hope you are also. So that's it from this introductory session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.